And we have done this kind of question, I have told you. Am I right? Yes, sir. Okay. Let's move to the next question. We have a question, limits extending to pi by 6 to sin square x plus sin x minus 1 upon this. We need to find its value. Anyone can tell me how to do it? Yes? I take हाँ बोलिए हाँ सुचिता तो is the Gauri So take how to do it? factors of sin x. So take factors of this quadratic. right, correct, 100% correct. Okay, this is a quadratic equation into sin x. We can factorize. Okay, when we put x to be pi by 6, I am getting it to be 0 by 0 form. No need to check, it will come. We have two methods. Either we can apply L'Hospital or we can factorize. I am doing both of them. Just factorize it. So I can say that limits extending to pi by 6. Can you complete it? Just factorize it, numerator and denominator, you will get the answer. Okay. Sin square x plus sin x minus 1 divided by 2 sin square x minus 3 sin x minus 3 sin x plus 1. Please factorize it, complete it, and tell me the answer. Hurry up. Jaldi कर लीजिए. Yes, anybody getting the answer? Limits extending to pi by 6. If I do factor, I'm going to get one factor is sin x. Yes, sir, minus 3. Minus 3. Okay, clear. Okay. I will get one factor sin x plus 1, another factor 2 sin x minus 1. In the denominator also, if I do factor, I am getting one factor to be 2x minus 1, another factor sin x. I am going to put, okay, I will get one factor to be 2 sin x minus 1, and I will get one factor to be sin x minus 1. Am I right? Okay, the term 2 sin x minus 1, that is 0, that gets cancelled. If I put x to be pi by 6, sin pi by 6 is 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 minus 1. So my answer is minus 3. Okay, that is correct. So this is the method that we can apply. However, for knowledge point of view, I am telling you with the L'Hospital. Okay, as I told you, L'Hospital is sometimes very important. We can do this with L'Hospital. Okay, that I am telling you. Just wait. I will like limits extending to pi by 6. I will differentiate the numerator. However, it is a lengthy term. Let's see what we are getting. If I need, I will do once again. If I differentiate the numerator, I am getting 4 sin x cos x. Okay. After that, plus cos x. d by dx of sin x is cos x. Sin square x 2 into 2, that becomes 4 into sin x into cos x. In the denominator, I am getting 4 sin x cos x. 4 sin x cos x. After that, minus of the 3 cos x. Cos x I can take common, it gets cancelled. So I can write limits x tending to pi by 6. Cos x get cancelled. I am left with the 4 sin x plus 1 divided by 4 sin x minus 3. Okay. It is not in the form 0 by 0 now. Now I can put x to be pi by 6.
Sine pi by 6 is half. 4 into half, that gives me 2 plus 1 divided by 2 minus 3, that gives me minus 3. Clear? Yes, sir. Okay, let's proceed. Okay, let's proceed. So you had done it, no? Gauri, you had done it, no problem. Oh, please keep on responding. Yeah? Keep your mic on and just tell me, because I cannot understand whether you had done or not. If you say you had done, I can skip, I can switch over to the next question. Right? Okay, we have this question. Okay. We need to solve it. Anyone can tell me how to do it? Limits extending to 1, we have cos of pi x by 2. Pi x by 2, I am writing in this manner, divided by 1 minus x. Yes, tell me. The hospital rule. Yes, one method is L'Hospital. We can get the answer very short, very quick. And another method, any other method except L'Hospital? So we can write cos pi x by 2 as sine pi by 2 minus pi x by 2. We can write. Okay, no problem. After that, Only these two. yes, it will create a problem. It will create a problem. Okay, we can route, but we cannot proceed. Just a minute. You are thinking to apply the sine theta by theta, sine x by x. Okay. The numerator you will get sine pi x by 2, but in the denominator, you are having x, 1 minus x. I need x. Okay. Then I can manipulate, I can multiply and divide with pi by 2. So I will make numerator denominator there, but if there is a term 1, that will make problem. Am I right? So replace x as 1 plus h. Right. Correct. Now calculate the right hand limits. Okay. Or you can do the left hand limit also. You can replace x and put it to be pi by 2 plus h. है ऐसे बोलते रहिए तो हमें क्लियर हो जाएगा कि आपको मालूम है, then we can go to the higher level. है ना, अभी तो बेसिक लेवल पे कर रहे हैं. Just complete it and get the answer. All of you, जल्दी है. Yes, got the answer? No, I have written wrong. X is tending to 1. X is not pi by 2 plus h. X is 1 plus h. We need to put x to be 1 plus h. गलत लिखा था. तो गलती करता हूँ तो बता दिया करिए. Yes, Suchita Gauri. So pi by 2. Pi by 2. You are getting pi by 2. Okay. So let's move to the next question. Jaldi kar raha hu. I am assuming that you have done correctly. Okay. This is a different kind of question. There is 1 power in 20 form and all that. We will do them later on. And this is log formula question. This is okay. I hope you know this. Okay? Let's proceed. Let's proceed. ln x minus 1 upon x minus e. You had done class 12. Okay. There are few formulas that I'm going to tell you, and we are going to apply all of them. Just a minute. Just a minute. I will insert a slide. I will tell you the formula. If you have forget, just get it remembered. Yeah. There are few basic formula that I had not told. So I'm not going to derive them. Okay. One formula that we know, that is limits x tending to 0. We have a formula x power n minus a power n divided by x minus a. I have written now it's x tending to a, not 0. Okay. So this is the formula that we have n into a power n minus 1. I hope everybody knows it. Am I right? Similarly, we have one more formula. Limits x tending to 0. I have log 1 plus x.
Okay, if I put x to be 0, I am getting numerator log 1, that is 0. In the denominator, I have x. We have a formula log 1 plus x upon this. How much? What is the formula? Tell me. That is 1. Am I right? Yes, sir, 1. 1. Okay. We have one more formula. Limits extending to 0. Limits extending to 0. E to power x minus 1 by x. That is also 1. Okay. These are the standard formula that we can apply anywhere. Huh? So I'm not going into details. I'm not going for the derivation and all those things. I'm skipping. Okay. But okay. Now we have this question. Limit extending to e ln x minus 1 upon x minus e. We need to solve it. It's very simple. If we apply the L'Hospital, I will get the answer within one line. But any other method except L'Hospital, I will not advise, I will not do all the problems with the L'Hospital. It's not good. We are in the learning state. We need to know the sequence, series, their expansion, manipulation, these things, so that we can use them throughout the year anywhere. Anyway, we have the question limits extending to e. बेसिक चीजें हमें मालूम हो जाता है, ठीक है. ln x, I can say that is log base e x minus 1 divided by x minus e. This is the question given to us. Okay, जल्दी बताइए कैसे करेंगे. L'Hospital छोड़ के दूसरा तरीका बताइए. Okay, sometimes we don't understand the question or it becomes difficult to proceed. In that case, most of the time, okay, what we can do, we can calculate the right hand limit or the left hand limits. Okay, when we convert the question, I will put x to be e plus h. I will get a very simple, very easy term, and we can get a formula or we can proceed very easily. Okay, so sometimes it's very difficult to apply the formula directly. So just convert it, calculate right hand or left hand. That I am doing. Let's see what we are getting. I will take x to be e plus h. E plus h रख देंगे तो फॉर्मूले में आ जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा. ज्यादातर क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन होते हैं एडवांस वाले, दैट वी नीड टू डू, वहां तो करना ही पड़ता है. Limits extending to e, I am taking x to be e plus h. So I'm getting the expression that is limits h tending to 0. x की जगह e plus h रखेंगे log base e plus h minus 1. 1 I am going to change. I am going to write that is log e divided by x. I am writing e plus h minus e. That gives me h. Anyway, I am showing e plus h minus e. E gets cancelled. I am left with the h. Now, in the numerator, I have got log m minus log n. That is log m by n. So limits h tending to 0. I am getting log e plus h by e divided by h. Or I can write that is limits h tending to 0 log. Here I am getting 1 plus h by e divided by h. So I have got the formula that is log of 1 plus x by x, that is 1. But both the x should be the same. दोनों x same चाहिए होंगे. But here I am having h by e, here I am having e. So I am doing a manipulation. So manipulate कर देने. I am just writing it to be h by e multiplied by e. This term has become a formula that is 1. Okay, multiplied by 1 by e. 1 by e is left. So my answer is 1 by e or e power minus 1. Clear? Yes, sir. हाँ, तो वो होता है, हमेशा ये करना पड़ेगा. देखो जी, एडवांस के क्वेश्चन में तो करना ही पड़ेगा, बल्कि मेंस में भी करना पड़ेगा. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला समटाइम्स वी कैन नॉट अप्लाई. Okay, either calculate right hand or left hand, you will get a very simple term. You can apply the formula directly or you can find out any other method also after that. जरूरी नहीं है कि राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो फॉर्मूला ही आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है. बट आई विल गेट अ वेरी सिंपल टर्म एंड वी कैन प्रोसीड. ठीक है ना? Yes. Okay, let's move. हाँ, what about this question? जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी बोलिए. Limits extended to infinity. This we need to solve it. Tell me.
So rationalize it. Rationalize it. Okay. Then I will get the answer. It's very simple, very easy. But anyway, if I put x to be infinity, that is infinity minus infinity form. Huh? ये infinity minus infinity form है. When you rationalize it, it will get converted into 0 by 0 या infinity by infinity के form में आ जाएगा. जो भी आएगा infinity by infinity या 0 by 0 के form में बाद में convert कर लेंगे. I will get the answer. But I'm not going to complete it. Anyway, as I told you, but never do this. करिएगा नहीं. It's not a good thing. पहले मैंने बताया था कि x is very large, extending to infinity in comparison to 1. In comparison to x square, I can delete 1. I can ignore 1. Huh? So the first term becomes under root x square. That gives me x. This term again also becomes x minus x. That gives me the answer 0. Logically, I have told you I will get 0. But never do this. Never do this. Okay? Yes, But sir. anyway, let's proceed. What about this question? Quick, huh? We need to go fast. And what I am saying, very soon, within 2-3 days, I'm going to start to take class on the interactive whiteboard. Okay, interactive panel. I have purchased an interactive panel. I am setting it up. I am finding the shortcuts and the methods. But very soon we will start the class on the panel. Okay, Yes, sir. that looks better. Okay. So we can use the formula a cube minus b cube is equals to a minus b, a square plus b square plus ab. No, it's going to be a difficult one. By that way, it's going to be a difficult one. Okay. Well, I don't say we cannot proceed, but just a minute. We can proceed. Huh? 1 minute. Just a minute. I बता रहा हूँ. Limits extending to infinity. Okay. We have 1 minus 2x divided by, I am having cube root of that much, 1 plus 8x cube. 1 plus 8x cube is cube root of power 1 by 3 is there. I'm just writing like this. After that, 1 upon 2 power x. Okay. We need to find its value. Whatever you said is correct, but it's not working here. Okay. We have a power 1 by 3 here. Okay. I cannot factorize a cube plus b cube. Am I right? Yes, sir. That makes a problem for it. After that, power 1 by 3. If power 1 by 3 is not there, then I can factorize. Am I right? I will get a square plus b square plus ab or power 1 by 3, and that will come default. Is it clear? Yes, sir. Okay. Just wait. As I told you, the first term, we have a polynomial highest degree. It is in the form of infinity by infinity. The first term, if you observe, that is this term is infinity by infinity form. If you take x to be infinite, you are getting numerator to be infinite, denominator to be infinite. Basically, infinity by infinity form. So as I told you, I will take the highest power common. I will divide with the highest power. Okay, you can say anything. This time I am going to write directly. Okay, I am going to write directly. Okay, and that is advisable also. अब बहुत कर चुके हैं, एक स्टेप बता चुके हैं. I am not going to tell you each thing every time. From the denominator, and learn how to write. In short, in the denominator, from the bracket term, take x cube common power 1 by 3. Basically, you will get x here. You get x here, take it into the numerator. You can write 1 by x. 1 by x minus 2 divided by, you have taken x cube common. The first term is 1 by x cube. After that, plus 8 whole power 1 by 3. Can you write or not? Tell me. Yes, sir. फिर से बताओ ना, फॉलो कर लिया ना? Yes, sir. हाँ, ये सब देखो. अब ये आगे मैं यही करूंगा. आगे भी मैं सीधे सीधे लिखूंगा, डायरेक्ट. गलत चीज है कि we need to write each and every step. Write everything directly. In JEE, you cannot complete more than 50% paper. Even when you know, okay, and you can do more than 50% paper, you can say 60%, 70% maximum, only when you do in very short. जब बहुत शॉर्ट में करेंगे तब तो 50% 60% पेपर कर पाएंगे, तो कभी हो नहीं पाएगा. ठीक है, 10% पेपर नहीं हो पाएगा अगर आप एक एक स्टेप लिखोगे तो. और उस टाइम पे जब क्वेश्चन आते होंगे, जब नहीं आते होंगे तो वो बात छोड़ दीजिए, तब तो कर ही नहीं पाएंगे. आने के बाद भी अगर आपने सारे स्टेप लिख के करने की आदत डाल रखी है और वैसे करेंगे तो कभी पेपर हो ही नहीं पाएगा.
Okay, let's proceed. Okay, the first term I can get. The second term, when I put x to be infinity, that is 1 upon 2 power infinity, that is 1 by infinity, that is 0. It is not 0 by 0. The second term is not 0 by 0 or infinity by infinity. I am getting its value to be 0. Okay, no need to touch it. Okay, it is not making a problem for me. So 1 upon 2 power x. If I put x to be infinite, what happens? I am getting the first term 1 by infinity, that is 0, 0 minus 2. I am showing you. Here, I am getting 1 by infinity, that is 0 plus 8. 8 power 1 by 3 is 2. After that, I am getting 0. 1 by infinity or 0. Basically, my answer is minus 1. Clear? Clear to everybody? जल्दी बोलिए. सुचिता. हाँ, चलिए आगे बढ़े. गौरी. अब स्पीड बढ़ा देंगे, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो हो नहीं पाएगा, सिलेबस नहीं हो पाएगा. Okay, we have this question. Anyone tell me? Without L hospital, okay? We will do L hospital question. Few question where we need to do L hospital. Without L hospital, we cannot do. I will do those questions with L hospital. हाँ, जल्दी बताइए कैसे करेंगे? Limits alpha tending to pi. We have sin alpha divided by 1 minus alpha square divided by pi square. Okay, we need to solve it. Tell me. I have one method. I have one method. I told you we can apply the right hand limit, left hand limit. Okay, I can replace x to be pi plus h. X की जगह pi plus h रख देंगे. I will get here sin pi plus h. Sin 180 plus theta is minus sin theta. So it will become minus sin h. I will put alpha to be pi plus h here. I can simplify that. Okay, no problem. I will get the answer. But that is going to be a little lengthy. That is going to be a little lengthy, but we can convert it into formula very easily. We should have an idea. देख के क्वेश्चन मालूम पड़ जाना चाहिए. So then it can be converted into formula. एक सेकंड, अभी बता रहा हूँ. I am writing sin alpha. In the denominator, if I simplify it, I am getting pi square minus alpha square. Pi square will go upside. I will get pi square minus alpha square. I can factorize. I can write pi plus alpha and pi minus alpha. Okay. Now see which terms are making problem. X is tending to, no, it is alpha. Alpha is tending to pi. So that means pi plus pi. This term is safe. This term is safe. Only this term are making problem. When I put alpha to be pi, I am getting sin pi, that is 0, and the denominator 0, 0 by 0 form. Okay. But I have a formula sin theta by theta, and both the theta should be the same. Okay. I can convert it very easily. I can write limits alpha tending to pi. Pi square is there, divided by pi plus alpha is there. No need to worry. But I need sin theta by theta. Both the theta should be same. In the denominator, I have pi minus alpha. I can convert sin alpha. I can write sin alpha to be sin of pi minus alpha. Sin 180 minus theta and sin theta both are same. Am I right? Now, I got sin theta by theta. Both the theta are same. Its value is 1. So I am getting pi square divided by 2 pi multiplied by 1. My answer is pi by 2. Got it? जल्दी बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, छोटे छोटे मैनिपुलेशन बता रहा हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी बता रहा हूँ. ये छोटे छोटे मैनिपुलेशन है. देखो, ये थ्रू आउट द ईयर वी आर गोइंग टू डू दिस. थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, अभी इस मैंने स्टार्ट कर दिया है. अब आई एम टेलिंग यू हाउ टू राइट इन शॉर्ट. हाँ, चलिए. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? चलिए बोलिए. L hospital is going to be very lengthy. ठीक है, तो वो तो कर भी नहीं पाएंगे. It's going to be very lengthy. And tell me another method. Limits extending to pi by 3. We have the quotient tan cube x minus 3 tan x divided by cos of x plus pi by 6. Tell me how to proceed and find out the easiest and the shortest way. Okay. I'm proceeding, I'm telling you. See the terms which are making problem. The numerator is 0, denominator is 0, it is 0 by 0 form. But from the numerator, I can take tan x common. Okay. No need to convert tan
into sine and cos unless it is necessary and it is required. Okay, don't do it in the very beginning. पूरी मैथ्स के अंदर ये चीज नहीं करी जाती कि tan का टर्म देखा उसको sin cos में कन्वर्ट कर दिया. No. Don't do this. Okay, unless it is required. Okay, let it go by that way. ठीक है. However, we will have to convert it because we have the terms of the tan and cos. है तो sin cos में तो convert करना पड़ेगा, but don't do it in the very beginning. It become lengthy. हाँ, मुश्किल हो जाएगा. But anyway, I can take tan x common. After that, tan square x minus 3 is left. Tan square x minus 3 is left. I can factorize. I'm writing directly tan x plus root 3 and tan x minus root 3. Can I? Jaldi boliye. Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the denominator, I have a cos of x plus pi by 6. I have a choice. I have an option. If I need, I can apply cos of a plus b. Okay. Formula, if I need. अभी जल्दी से नहीं, बगैर सोचे समझे नहीं कर देना है. If I need, I will do this. I have an option. जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं पड़ेगी नहीं करेंगे. Now, see, this term is same. This term is same. This term is 0. Only this term is 0. So, take this two term outside. That will be my answer. Limits extending to pi by 3. We have a tan x. We have a tan x plus root 3. These terms are same. After that, we are left with the tan x minus root 3 upon this. Okay. We have one method. I can apply L'Hospital, but apply the L'Hospital for this term and this term only. Don't apply L'Hospital here. Keep it outside. Take it outside. After that, you can apply L'Hospital. You will get the answer very short. Quickly आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. But anyway, I'm going to avoid that also. Okay. In the whole trigonometry, the term root 3 by 2, they are quite common. They are very important terms also. Okay. Anyway, no problem. I can apply cos a plus b in the denominator. In the numerator, I have 10 terms. So I am converting tan. Okay, cos a plus b will have a sin term and the cos term. Cos a, cos b minus sin a, sin b. Okay, cos term will be there. Sin and cos term will be there. So I need to change tan x into sin and cos. उसको मैं लिखने जा रहा हूँ. Sin tan x, I will write sin x upon cos x. Then you are going to get sin x minus of the root 3 cos x. One term. And you will get cos x in the denominator also. ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. No, Divided by cos x. I'm writing directly. Divided by cos x, I am getting. No problem. no, sir. Tan को मैंने sin by cos लिख के LCM लेके solve कर दिया. I got this term. I got sin x minus root 3 cos x. Now this term will make problem. This is same. In the denominator, I am applying cos a plus b formula. I am writing here. Cos a plus b, that is cos a cos b. That is cos x cos pi by 6. That is root 3 by 2. Minus of sin a sin b. Okay, that is sin x. And sin pi by 6 is 1 by 2. Now, just see carefully. I got the answer. I'm writing. I have got limits extending to pi by 3. Tan x, that is safe. Tan x plus root 3, it is also safe. I have got 1 upon cos x, that is also safe. Okay. In the denominator, I will take LCM, then 2 will go upside. After that, sin x minus root 3 cos x is left. In the denominator, the bracket term, I am getting cos x, root 3 cos x minus sin x. Okay, I am getting root 3 cos x minus x. Now, both the terms are same, but with a minus sign. So this term and this term get cancelled, but I am getting minus 1. Now, I will put x to be pi by 3. Tan pi by 3 is root 3. Here, root 3 plus root 3, that will give me 2 root 3. After that, 2 is in the numerator and cos. Okay, pi by 3 is half. If I simplify, what we are getting? Tell me. Okay, 2 to 4 to 8 into 3, that is 24 with minus sign. Okay, minus sign is also there. My answer is minus of the 24. Clear? Yes, sir. हाँ, देखो शॉर्ट में बता दिया मैंने. अब ऐसे ही करना है, ऐसी आदत डालनी, बता दे रहा हूँ, है ना. तो लिमिट्स को मैं इसीलिए कराता हूँ कि आप मैनिपुलेशंस, है ना, और कैलकुलेशन कैसे बचाना है ये सीख जाते हो. तो आगे कोनिक सेक्शन होगा या अलजेब्रा होगा, इवन ट्रिग्नोमेट्री होगा, कहीं पे भी होगा, तो
ऑलवेज आई विल स्किप मेनी स्टेप्स, है जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व करते हैं वो स्किप कर जाऊंगा, लेकिन यहाँ से थोड़ी आदत पड़ जाएगी, थोड़ा सीख जाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है। ओके, एनीवे वी हैव दिस क्वेश्चन दैट इज 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन जो होंगे वो मैं बाद में कराऊंगा, वो वाले हॉस्पिटल से भी हो सकते हैं, और वी हैव ए फॉर्मूला आल्सो दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, है वो लास्ट होगी। ओके, वी हैव दिस क्वेश्चन। हाँ जल्दी बताइए, कॉस इनवर्स we have limits extending to 0, we have cos inverse of 1 minus x divided by root x, है ये है, we need to simplify it। हाँ बताइए कैसे करेंगे। Yes, anyone? Okay, just wait, it's good question, I'm telling you, just wait a minute। We have a formula sin inverse x by x, that is also one, but we are having cos inverse instead of sin inverse. However, I have a choice that we can do. I can convert cos inverse, I can write it to be pi by 2 minus sin inverse. I can write, or I'm showing you, I can write the numerator as pi by 2 minus sin inverse of 1 minus x. But in the denominator, I have a root x. Okay. We have the formula sin inverse x by x, that is 1, but we have a different terms. We are having sin inverse 1 minus x upon root x. So I have a choice. What we can do? Tell me, anyone? You have to try to get the sine term in the bracket for the We unwritten can? sign. Like What? sine inverse sine x could be equal to x, something like that. Yes, sir. We cannot proceed by this way, है ये बात follow कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। Yes. sir. हाँ ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, जस्ट एक मिनट। ओके, एक चीज है that we do everywhere. I do in the trigonometry, I do everywhere in the maths, differentiation है, integration है, or anywhere in the maths, in the inverse trigonometry chapter or the trigonometry, ठीक है। Most of the time that we do and that वही करना चाहिए और नहीं वही करना चाहिए, बता दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। We don't have any chapter like inverse trigonometry नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। Convert always inverse trigonometry term into trigonometry. Inverse trigonometry को just convert into trigonometry. After that, you can apply sin A plus B, sin C plus sin D, half angle, double angle formula, anything you can do. ठीक है, we don't have the formula, many formula related to the inverse trigonometric function. कुछ फॉर्मूले हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो वी हैव ए ऑप्शन, बता रहा हूं, हम ये cos इनवर्स अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देंगे। आई विल कन्वर्ट इनटू ट्रिग्नोमेट्री, देखता हूं क्या होगा। ओके, if I take 1 minus x to be cos theta, so then I will get cos inverse cos theta, cos inverse cos will get cancelled. I will get theta. So I am going to make a change. I am taking let 1 minus x to be cos theta. Okay. Or when x is tending to 0, then the left side is 1, cos theta is 1, that is gives me theta to be 0. Theta is tending to 0. Okay. So I can write that is limits theta tending to 0, cos inverse cos theta, basically theta. Okay. But in the denominator, I have a x. X I can say under root of 1 minus cos theta from here. Huh? I can write the value of x in terms of the theta, that is 1 minus cos theta. Can I? Jaldi boliye. Yes, sir. Now, the whole expression got converted into trigonometry. We can apply trigonometric formula, sin theta by theta. We can rationalize. We can do anything. Okay, we have many options, but best option is that use the half angle formula to get the answer quickly. Limits theta tending to 0. I have the theta in the denominator 1 minus cos theta. If I solve it, I am getting under root 2 of sine of theta by 2. Can I write this way? Yes, sir. Okay, in the numerator, I have a theta. I need theta by 2. So I'm doing a manipulation.
I am just writing 2 here, I am writing theta by 2 here. So what happens, sin theta by theta, both the theta are same, its value is 1. So basically I am getting 2 by root 2, or I can write it to be root 2. Clear? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो आगे भी क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में करेंगे. इफ यू आर फाइलिंग, इफ यू फाइंड इट कंफर्टेबल देन टेल मी. वो दिक्कत आ रही तो बाद में कर लेंगे इस तरह की चीजें, ठीक है. लेकिन हम आपको तरीके बता दे रहे हैं कैसे शॉर्ट में करना है, ठीक है ना. तो ज्यादा परेशानी तो नहीं आ रही है. No, sir. No, sir. हाँ गौरी सुचित, हाँ अपना मेथड चेंज करिए, मेथड चेंज करिए, ठीक है. यही प्रॉब्लम आ जाती है क्लास 11th में 12th में. जब मैं पढ़ाता हूँ तो इसी तरह से बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ. उनको आदत पड़ जाती है धीरे धीरे, विद इन ए 1 डे. हाँ जल्दी से नहीं आएगा, ठीक है. टाइम लगता है इन सब चीजों को आने में. शॉर्ट में कैसे लिखा जाए हर एक्सप्रेशन को, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वी नीड टू डू दिस. ये नहीं करेंगे कभी जेई हो नहीं सकता है. ये सीखना पड़ेगा. तो हमारा क्या है कि आपको मैं तरीके बता सकता हूँ कैसे शॉर्ट में लिखा जाएगा. थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, महीना 2 महीने 3 महीने बाद you will find that you can write very easily without committing a mistake. अभी शुरू में करेंगे तो मिस्टेक भी होगी, लेकिन आदत ऐसे ही डालिए, ठीक है. पूरी मैथ्स में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकुलर चैप्टर. इस चैप्टर की नहीं बात कर रहा हूँ, सब जगह की बात कर रहा हूँ. चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, और चाहे जो हो. ओके, लेट्स मूव. कैलकुलेशन बचाइए. व्हाट? ओके, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, जल्दी बोलिए. Limits theta tending to pi by 4. We have root 2 minus of the cos theta plus sin theta divided by this, है ना. एक काम कर रहा हूं, आपसे मैं कह दे रहा हूं कर लीजिए. There is some reason for that. इस तरह की चीजें जेई में रहती हैं, बहुत सारी रहती हैं, ठीक है. डिवाइड बाई 4 थीटा माइनस पाई होल स्क्वायर, ठीक है. We cannot apply any formula directly right now, as I told. Replace theta to be pi by 4 plus h. You replace theta, write it to be pi by 4 plus h. Okay. थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ तो शॉर्ट में कर दीजिएगा. थीटा इज pi by 4 plus h. इन द न्यूमरेटर थीटा की जगह pi by 4 plus h रख दीजिएगा. सॉल्व कर लीजिएगा. इन द न्यूमरेटर you will get here cos pi by 4 plus h, you will get sin pi by 4 plus h. Apply sin a plus b cos a plus b formula, right? Sin pi by 4 cos pi by 4 are 1 by root 2. Put their value, simplify it and get the answer. हाँ जल्दी करिए, अपने आप दिखाई पड़ जाएगा. After that I will tell you the shortcut है, उसके बाद बताएंगे. जल्दी करिए. ओके. हाँ ठीक है. वी हैव ओनली few questions है, एक ही क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है. आफ्टर दैट आई विल स्विच ओवर द आर्टिकल. है ओके. एक काम करिए, थोड़ी सी आदत डालिए, एकदम शॉर्ट में लिखिए. एक सेकंड. 1 मिनट अभी बता रहा हूं कैसे लिखना है आपको. हाँ न्यूमीटर में रूट 2 लिखा हुआ था, माइनस लिखिए. यहाँ पे मेंटल वर्क करिए. इट इज कॉस पाई बाई 4 प्लस एच. ओके. कॉस ए कॉस बी, कॉस पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2 कॉस बी कॉस एच माइनस साइन पाई बाई 4 साइन एच. राइट इट डायरेक्टली दिस वे. थोड़ा आदत डालिए. Minus sign is there, sin pi by 4 plus h, sin a plus b, that is sin a cos b, sin pi by 4, that is 1 by root 2 cos h. Okay, after that plus cos a sin b, cos pi by 4, 1 by root 2 sin h. Okay, ऐसे करके आदत डालिए, सीधे लिखिए. बात क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है. अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस ये sin h रूट term 1 by root 2 sin h term will get cancelled. So you are left with the under root 2 minus under root 2 cos h. Under root 2 cos h.
In the denominator you are going to get h square. ठीक है ना? Now we can proceed very easily. Am I right or not? जल्दी बोलिए. Yes, sir. From the numerator you can take root 2 common. Take root 2 common, 1 minus cos h, apply the half angle formula, get the answer है. Check करिए फिर उसके बाद हम बताएंगे. उसके बाद हम बचाएंगे दूसरी चीज है, दूसरा मेथड दैट इज बेटर वन. The answer is coming 1 by root 2. No, 1 by 16 root 2. Okay, no, I'm getting not h square, I'm getting 16 h square in the denominator. ठीक है ना? Yes, sir. denominator 16 h square होगा, 16 मैंने लिखा नहीं था. ठीक है? Yes, sir. हाँ चलिए ठीक है. तो ये तो हमने कर दिया. एंड ऑलवेज मतलब ऐसा है, इसको करने में फायदा रहता है. हमने कहा ना कि थीटा की जगह पाई बाई 4 प्लस एच, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लगाइए, क्वेश्चन बिकम्स मोस्ट ऑफ द सिंपल. हाँ, वो एक्सप्रेशन आएगा, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन होगा, वी कैन प्रोसीड, आसानी से प्रोसीड हो जाएगा. वी आइदर वी गेट द फॉर्मूला, फॉर्मूला बन के चला आएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत वी कैन सिंप्लीफाई है, वो सब ठीक है. ओके, I have told you this method, that's a good method, and I advise people to do this. Huh? But anyway, in this particular question, I have a different method also. And just wait a minute, I am going to write in a different manner. Just wait. I have got a very important term, very good term that we have in the whole trigonometry, whole mathematics. Okay, just wait. Under root 2 is there is a term sin theta and a term of cos theta. I can convert this two terms together into a formula. How? That I am telling you. Just a minute. Take minus sign common. After that, I have a cos theta. I will get plus of the sin theta. Am I right? Jaldi boliye. Yes, sir. Okay. In the whole trigonometry, whenever we see a term, something like this, a sin theta plus or minus whatever, b cos theta, a sin theta plus b cos theta, what we do, we multiply and divide with under root of a square plus b square. Then I get a result that its maximum value is under root a square plus b square, minimum value is minus of the under root a square plus b square. I hope you know it. Am I right? ये तो मालूम है ना? Yes, sir. अच्छा ठीक है. दूसरी चीज एक और है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. We can change the term a sin theta plus b cos theta in sin a plus b or cos a minus b. Sin a plus b में cos a plus b में कन्वर्ट करा जा सकता है. Very easily, very easily. ठीक है. एक काम करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इज 1 बी इज 1, तो अंडर रूट 2 आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द रूट 2. ओके, सो जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू राइट एज 1 by root 2, 1 by root 2 and 1 by root 2 here. That we can do. Am I right or not? जल्दी बोलिए. Yes, sir. It becomes sin pi by 4 plus h. Right. It becomes sin pi by 4 plus h. You are correct. Okay, just a minute. Okay, whole square. I can write it to be sin pi by 4 plus h, but एक स्टेप आगे की सोचिएगा, एक स्टेप आगे की सोचिएगा. साइन में लिख देंगे तो रूट 2 कॉमन आएगा, तो 1 माइनस साइन आ जाएगा, है ना? राइट? तो Yes, वी sir. कैन राइट इट टू बी sin pi by 4 plus h. No problem. We can write. But if I write it in terms of the cos, इसको cos में लिख देंगे, ठीक है? तो रूट 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos. We can use the half angle formula later on easily, है ना? cos में करना बेटर रहेगा, ठीक है ना? ये बात फॉलो कर लिया ना? Yes, sir. हाँ, अगर मान लो ये टर्म ना होती, ये टर्म नहीं होती, पहले वाली टर्म रूट 2 नहीं होती, तो साइन में लिख देते, पक्का साइन में लिखते, तब साइन थीटा बाय थीटा बना लेते, ठीक है? लेकिन अभी हमारे पास साइन लेके फायदा नहीं है, सो आई एम गोइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ द कॉस. सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली, है, इट्स क्लियर टू यू, सो आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली,
theta tending to pi by 4 root 2 I am taking common, and here I am writing 1 minus cos A cos B plus sin A sin B, that is cos A minus B. So I can say cos of theta minus pi by 4 or cos pi by 4 minus theta. You can write anything. Okay, theta minus pi by 4 you can write. Am I right or not? Yes, sir. In the denominator you have got 4 theta minus pi, its whole square. Obviously it's very clear that we will use half angle formula. Half angle formula तो use करना ही पड़ेगा, sin theta by theta बनाएंगे, and its value is 1. Just a minute, अभी आप लोग सही बोल रहे हैं, आप रिस्पॉन्स करते रहिए तो उससे आइडिया रहता है हमें, तो हमें भी अच्छा लगता है पढ़ाने में. थीटा टेंडिंग टू पाई बाई 4, रूट 2 इज देयर, इसको बाहर लिखिए. I will use the half angle formula, so I will get 2 sin square theta minus pi by 4 whole divided by 2. ठीक है. अब एक परेशानी आ रही है, इन द डिनोमिनेटर आई हैव 4 थीटा माइनस पाई. ठीक है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो थीटा माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा. है, आई एम शोइंग हियर, यहीं पे शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ठीक यहीं पे शो कर दे रहा हूँ. ओके, सो आई विल टेक 4 कॉमन, दैट बिकम्स 16 थीटा माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर. ठीक है, सो आई हैव गॉट 16 आउटसाइड. I have got theta minus pi by 4 whole square, but I need theta minus pi by 4 divided by 2 whole square. I need this term. So sin theta by theta, दोनों theta same हो जाएंगे, है ना? So I will write 4 here. Is it clear? जल्दी बोलिए. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं, हमने 16 बाहर लिख दिया तो दोनों चीजें एक साथ करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बाहर कर दिया. Now this term, ये term तो मेरे पास 1 आ गई. Okay, now I'm going to write the answer. That's all. So I am getting root 2 by 16. Okay, I'm not, after that 2 by 4. So what we are getting, 1 upon 16 root 2. Am I right or not? Yes, Yes, sir. sir. हाँ ठीक है. चलिए, now we have very good question. JEE का question है, it's 2001 question, very good question है. JEE का question, अभी एक question और कराऊंगा. हाँ, very good. हाँ, इस क्वेश्चन वी नीड टू सॉल्व इट. जल्दी बताइए कैसे करेंगे. ओके, डू इट विद एल हॉस्पिटल. चलिए एल हॉस्पिटल से कर लीजिए, एल हॉस्पिटल से कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. बट वी कैन प्रोसीड विदाउट एल हॉस्पिटल आल्सो, दैट आई विल टेल यू. अभी बताऊंगा. So can we write pi cos square x as pi minus pi cos square x, so it becomes sin square x? right. Proceed, get the answer. Proceed, get the answer. Suchita, you were speaking, am I right? Yes, sir. Okay, you are good, doing good. Proceed, get the answer. The answer is pi. आंसर इज फाइन, यू आर करेक्ट. ओके, सुचिता आपने कर लिया है, यही चीज मैं बताना चाहता था जो आपने करा है. चलो दो, ठीक है. आई वांटेड टू टेल यू एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट यू हैव डन, बट जस्ट वेट. आई हैव द क्वेश्चन, लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू 0 sin of pi cos square x, okay, divided by x square. I can write it to be limits extending to 0 sin theta by theta is 1. Okay, so obviously when I see the term pi cos square x, so I will multiply and divide with the pi cos square x.
So I have divided with the pi square x. I will multiply with the pi square x divided by x square. Okay, no problem. Now this term is 1. After that, pi is there. X is tending to 0 cos 0 is 1. But in the denominator, if I put x to be 0, so I am getting answer to be infinite. Am I right or not? Yes. But answer is pi. I have committed a mistake. एक चीज होती है जो मैं पहले ही बताना चाहता था, अभी एक चीज और बता दूंगा, फिर से बता दूंगा अभी, है? एक सेकंड. In the limits question, 99% of the time we never get the answers like 0 or infinite. However, it is possible. ये हो सकता है कि आंसर 0 या infinite आ जाए. ठीक है, लेकिन if I get 0 or infinite, then 80%, 90% chances are there, 95% that we have committed a mistake. ठीक, तो आंसर इंफिनिटी या 0 नहीं आते हैं, आने को आ सकते हैं, लेकिन अगर 0 या इनफाइनाइट आते हैं, जस्ट चेक द क्वेश्चन दैट वेदर यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक और नॉट. है, अभी बता रहा हूं, जहां पे मैं बताना चाहता था पहले लेकिन नहीं बताया था, बता रहा हूं. हाँ, इन दिस क्वेश्चन आई हैड गॉट द आंसर 0. तो 0 यूजुअली नहीं आता आंसर. ठीक है, लेकिन जब 0 आ जाएगा तो जस्ट चेक द क्वेश्चन वेदर यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक और नॉट, फाइंड इट आउट. है, अगर वो कोई मिस्टेक नहीं कर रही है, ओके, देन इट्स ओके, द आंसर इज 0, करेक्ट. थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों का. बट एनीवे, आई हैव गॉट द आंसर इनफाइनाइट. तो चांसेस आर देयर दैट आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक. टेल मी वेयर आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक. देयर इज अ मिस्टेक समवेयर. फाइंड इट आउट. फाइंड इट आउट. एक मिस्टेक होती है, ज्यादातर लोगों से होती है. ध्यान देना पड़ेगा. So in denominator, it is pi. ओके, वो बात की चीज है. न्यूटन में पाई बाय 0 इनफाइनाइट आ गया है ना. Yes, sir. मतलब, yes, sir. हम्म. Sir, but we can't write sin pi cos square x by this as 1 because it's not 0 by 0 form. अब सही आया, सब सही आया, अब सही आया. We always write sin theta by theta to be 0, but we can write only when both the theta are same and both are 0. ठीक है, तो denominator की ये टर्म जो है, when I put x to be 0, so cos 0 is 1. I am getting sin 0 by 1 or 1 into pi, है? Pi into 1. It is not sin 0 by 0. Okay, that this term is not 0, so it is not 1. This is a mistake. Got it? I cannot write it 1. Yes, sir. बात फॉलो कर लिया ना. हाँ, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं है, साइन 0 by 0 नहीं है, दैट इज साइन 0 by 1. ठीक है, सो दैट इज अ मिस्टेक आई हैव कमिटेड. है, बट एनीवे, आपने बताया था, सही बताया था, मैं फिर कंप्लीट कर दे रहा हूँ. लिमिट आई कैन राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई cos square x. I can write pi minus pi sin square x divided by x square. Okay, in place of the cos square x, I have written 1 minus sin square. I opened the bracket. Sin 180 minus theta is sin theta. The basically question got changed. I have got sin of pi sin square x divided by x square. I got this term. Now we can proceed. So you Now have I can apply. pi minus pi cos square x. No. Here I have written sin. I have pi here. I have written cos square x, that is 1 minus sin square x. Okay, sir. Okay, sir. Got it. Okay, got it. ऐसे लिखा है. Now I am going to convert into sin theta by theta form. Limits extending to 0 sin of pi sin square x. And here I need to divide with the pi of the sin square x. I need to divide it. Huh? So I will have to multiply with the pi sin square x also. And here x squared. Okay, now this term is sin 0 by 0 when x is tending to 0. Before I had here, यहाँ पे मैंने बताया था ये cos square x था, तो ये 1 था, लेकिन I have got sin square x, that is 0. So sin 0 by 0, both the 0 are same, so its value is 1. That we can write. And here also sin theta by theta, that is 1 square, basically 1.
So I got the answer, that is 1 multiplied by pi, or pi is my answer. Clear? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए, ओके ओके ओके, नहीं अच्छा लग रहा है आज पढ़ाने में, पहली बार अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, नहीं टाइम लगता है, देखो मैं जब बिगिनिंग में जब स्टार्ट करता हूँ क्लास को तो थोड़ा मैं भी डरता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग, तो हमें आइडिया लग जाए। जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, जो चीज आपको आती है वो मैं नहीं बताऊंगा। सो आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नो है, जो नहीं मालूम है वो बताऊं, जो मालूम है वो बताने का कोई फायदा नहीं है, इट्स यूजलेस, आई नेवर लाइक दिस। ठीक है, Yes, sir. जस्ट हाँ नहीं ठीक है, अभी अगली क्लास में और अच्छी हो जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लास अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, एंड गो बाय माय वे, है मेरी तरह से आगे बढ़िए, प्रोसीड करिए, इसको सीखिए कैसे हर चीज को शॉर्ट में करना होता है, कैसे शॉर्ट में लिखना होता है, एंड दैट कम्स बाय प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस करके ही आएगा, और कोई तरीका नहीं है। नाउ वी हैव ए बेटर वेरी गुड क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रॉब्लम दैट वी हैव। जेई क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, ऑफ डिफरेंट फॉर्म में आया है, मतलब बदल के भी आया है। तो एक जो क्वेश्चन बहुत पुराना जेई का है, 2000 के आसपास का क्वेश्चन होगा, वो बता रहा हूँ, उसका 2-3 बार आया है, लेकिन बदल के आया है। ठीक है, जस्ट मिनट, आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन, आई डोंट हैव इन दिस स्लाइड। अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन limits x tending to alpha, I have 1 minus cos of ax square plus bx plus c divided by x minus alpha whole square. अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे आया बता देता हूं मैं, है कैसे कैसे आया। एक बार ऐसे भी आया था, यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया था, ये टर्म हटा दी थी। ठीक है, ऐसा ही बन गया। और एक बार x टेंडिंग टू 1 बाई अल्फा करके आया गया था। ठीक है, इस तरह से भी आ गया था, 2-3 बार आए क्वेश्चन, बट आई विल कवर ऑल ऑफ देम लेटर ऑन, अभी नहीं। अभी तो इजिएस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी टफ हो जाएंगे थोड़े से। तो वी हैव द ऑप्शंस, आंसर जो है मेरे पास दे रखे थे इसने, आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ द अल्फा एंड बीटा। दे हैव गिवन 1/2 अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। They have given something like this 2 times a square alpha minus beta whole square. They have given 1/2 of a square alpha minus beta whole square, and something like this more option we can generate, है ना। इस तरह से 2-3 ऑप्शन दे रखे थे, we need to solve it। बताइए कैसे करेंगे। The half angle formula. हाफ एंगल फॉर्मूला ऑब्वियसली है, आपने बोल दिया, मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद पूछूंगा आपसे तब बताइएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला तो यूज करेंगे ऑब्वियसली। लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू अल्फा, आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली, है डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ। If I use the half angle formula, 1 minus cos theta will give me 2 sin square theta by 2. 2 sin square theta by 2. That means ax square plus bx plus c divided by 2. ये आ जाएगा। Okay. But I need to apply sin theta by theta. Both the theta should be same. दोनों theta same चाहिए होंगे। ठीक है। अब I have got ax square plus bx plus c by 2, so I will have to write ax square plus bx plus c by 2 whole square. I will have to write, नहीं तो लिखना ही पड़ेगा, इसके बगैर लिखे नहीं होगा। ठीक, उसके बाद I need to multiply with the same term also. So 2 square is 4, I am writing 4 here, and I am writing ax square plus bx plus c whole square. ओके, अब इसे मैनिपुलेट कर दिया, आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद द टर्म्स x माइनस अल्फा होल स्क्वायर। यहाँ तक तो सही लिखा है ना। और यहाँ पे ये टर्म तो 1 बन जाएगी, आई विल नॉट टच इट, है इसको नहीं टच करेंगे। व्हाट अबाउट दिस, जल्दी बोलिए। Then we can write ax square plus bx plus c as x minus alpha x minus beta into a coefficient of x square. सुचिता बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है। Thank you, sir. नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रही है। आज तो मुझे लगा कि आपका परसेंटाइल 87-85 के आसपास आया था ना। 84. 84 ज्यादा आना चाहिए था, जिस हिसाब से आज आप परफॉर्म कर रहे हो उस हिसाब से ज्यादा आना चाहिए था।
ठीक है ना? Actually, I got through the questions which you have sent in the group, in the PPT. हाँ हाँ हाँ, अच्छा, That's why. उसको आपने घर पे ट्राई कर लिया कर, Yes, है I ना? practiced those. Yes. अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है ठीक है, नहीं अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है। नाउ नाउ कम टू द क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अभी मैं आपको दूसरी स्टडी भेज दूंगा, ठीक है ना? राइट, वो हायर लेवल पे होगी। नहीं आज नहीं भेजूंगा, अभी थोड़ा सा आर्टिकल 1 के पावर इन्फिनिटी वाला कंप्लीट करा दूंगा, देन आई विल सेंड ऑल ऑफ यू ए हायर लेवल क्वेश्चन, हायर लेवल के क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है? बट एनीवे, Yes. जस्ट a minute. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ आई पुट x to be अल्फा, यहाँ पे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बनेगा, दैट विल बिकम 0 cos 0 is 1, so basically it was 0 by 0 form. Never anything will be asked randomly, only genuine question will be asked, huh? It is undeterminate form, वो नहीं मालूम पड़ा था लेकिन है कैसे। अगर if I put x to be अल्फा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c is 0, cos 0 is 1, 1 minus 1, 0 by 0 फॉर्म, 0 by 0 का फॉर्म था, ठीक है? और यहाँ पे भी ये चीज आ गई, इफ आई पुट x टू बी अल्फा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, दैट इज 0 एंड 0 हियर, तो आई हैव 0 by 0 फॉर्म। बट एनीवे, आई कैन फैक्टराइज दिस टर्म, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो एक चीज है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू 1 रख दे रहा हूँ, हालांकि गलत चीज होती है जब पूरे इसको एक्सप्रेशन नोट करिए, x की जगह अल्फा फाइनल इक्वेशन में लिखिए। बट एनीवे, टू सेव टाइम, ओके, बड़ी सी टर्म को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए इसकी जगह मैं 1 लिख दे रहा हूँ, है? ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक में हमने x की अल्फा रख के इसकी वैल्यू 1 One कर दी thing दूसरे here. में, है? So you can write sine square and write the quadratic equation in terms of roots. So that's हाँ, why it will become 0 by 0. राइट 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 राइट। सो आई एम जस्ट राइटिंग 2/4, ये तो 1 आ गया, इसको मैं शो कर दे रहा हूँ, ये गलत होता है, करना नहीं चाहिए। बट एनीवे, द टर्म इन द न्यूमरेटर आई एम राइटिंग x minus alpha, I can factorize x minus beta divided by x minus alpha whole square, है? और इसका स्क्वायर है, am I right? जल्दी बताइए, सही लिखा है? Yes, sir. नहीं सोचिए, आपने बोला तो सही था, लेकिन आपने नोटिस नहीं करा, बोला सही था। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आई कैन नॉट राइट एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसे नहीं लिख सकते, आई विल हैव टू राइट ए आल्सो, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, डोंट डोंट फॉरगेट द टर्म, है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इफ आई राइट एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, दैट इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता है। यूजुअली क्या होता है, इन द मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मोस्ट ऑफ द टाइम इज 1, so we write x minus alpha x minus beta like that, okay? But here the coefficient of x square is a on the left side, on the right side if you open you are getting x square term only, okay? So they are not matching. Coefficient of x square, coefficient of all those things are missing, so I need to write a करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? Don't forget a. So you have got the answer, okay? So x minus alpha whole square, this term will get cancelled. Now you are getting 1/2 into 1. After that, a square is there. Put x to be alpha. Then you are getting alpha minus beta whole square. So my answer is 1/2 a square alpha minus beta whole square. That is my answer. Clear है? Yes, sir. कोई परेशानी तो नहीं? No, sir. अच्छा, एक काम कर रहे हैं, जब ये आपको इतना मालूम है तो एक चीज में कंप्लीट ही कर दे रहा हूँ। इतना तो आपको मालूम है, एक चीज, एक आर्टिकल जो है मैं कंप्लीट ही कर दे रहा हूँ, इसको जस्ट समझना। जो दूसरा क्वेश्चन है जी वो बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन होगा, मैंने कहा ना डिफरेंट फॉर्म में आया था। अभी जो PYQ कराएंगे ना तो उसमें मिलेगा, अभी रिसेंट भी आया है, 4-5 साल के अंदर आया है। जस्ट ए मिनट है, सेम क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c to be 0. Then alpha and beta, then limits x tending to 0, 1 minus cos cx square, जैसे मैंने गलत लिख दिया मैंने, प्लस bx प्लस a डिवाइड बाई x minus 1 by alpha.
और इसका सेम क्वेश्चन है, अंडर रूट वगैरह करके भी आया है, वो बाद में अभी बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्सटेंडिंग टू 1/α, जस्ट ए मिनट। एक्सटेंडिंग, हमने कहा ना गलत क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। ओके, वी नीड टू फाइंड इट्स वैल्यू। आंसर जो भी होगा अल्फा और बीटा के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बताइए। एनीवन? एक सेकेंड है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, बता रहा हूं, जस्ट ए मिनट है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन के अंदर वी हैव द टर्म सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोनों टर्म को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो वी कैन रिकॉल समथिंग, इफ यू नोट इज वेरी गुड, अदरवाइज जस्ट गेट दिस रिमेंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। अल्फा बीटा आर द रूट्स of equation ax square plus bx plus c to be 0. Then equation whose roots are 1/α and 1/β. एक इक्वेशन निकालनी जिसके रूट्स 1/α 1/β होंगे। देन व्हाट वी डू, ठीक है, रिप्लेस x विद 1/x, x की जगह 1/x रख दीजिए, ठीक है। If we replace x with 1/x is question number 1 में, so I will get a into 1/x square plus b into 1/x plus c to be 0, और सिंप्लीफाई कर देंगे एलसीएम लेके, then I am getting cx square plus bx plus a to be 0. Am I right? जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, तो ये मालूम था कि नहीं मालूम था? ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक चीज है, cx square plus bx plus a is a quadratic equation whose roots are 1/α and 1/β. तो x की जगह 1/α रखेंगे यहाँ पे, या 1/β कुछ भी रखेंगे, x की जगह 1/α रखेंगे। आई एम गोइंग टू गेट cos 0. cos 0 is 1. Okay, so basically 0/0 form. So I will do the same thing that we have done just now, है ना। अभी वही करने जा रहा हूँ, पूरा एक्सप्रेशन एक बार में लिखने जा रहा हूँ। So I have got a result. The roots of the equation that is given in the numerator is 1/α. So limits x tending to 1/α. I will use the half angle formula to sin square cx square plus bx plus a divided by 2. I will make sin theta by theta. After that, I will write cx square plus bx plus a by 2 whole square. And I will write 4 here. I will write this expression. Direct लिखने जा रहा हूँ, हाँ। cx square plus bx plus a, I will write. इसको लिखूंगा, और I can factorize. इसके रूट्स 1/α 1/β है। So I can write it to be x minus 1/α into x minus 1/β. But the coefficient of x c square, coefficient x square का c है, so I will have to write c also. c भी लिखना पड़ेगा, and its square. In the denominator I have x minus 1/α whole square. ठीक है, now बात फॉलो कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। हाँ, जो अभी किया था वही करना है, मैं स्टेप बचा के लिख दिया। तो इफ यू ओपन द ब्रैकेट x minus 1/α whole square and there they will get cancelled. I will get the answer 2/4. After that I am getting 1. After that I am getting c square. After that, if I put x to be 1/α, I will get 1/α minus 1/β whole square. So my answer is 1/2 c square 1/α minus 1/β whole square. That will be my answer. Clear? यस Yes, सर। sir. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। चलिए ठीक है। सो वी विल स्टॉप ना। अब हमें अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े से अब चेंज हो जाएगा। वन मोर क्लास आई विल डू फॉर द 1 power infinity फॉर्म, और एक बार में होता भी नहीं, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। और
if I need, I will extend the class. Class को बढ़ा दूंगा, लेकिन complete कर दूंगा. After that, we will start PYQ. ठीक है? So Yes, sir. please log out. We'll continue in the next class. ठीक है? Thank you, sir. Oh, Thank you, sir. thanks. Okay, thanks. Okay, bye, everybody.